Hello friends, my name is Mudassir Manzoor and I welcome you all in this new initiative of computer awareness, which is going to be special for you people that will help you in different competitive exams like in banking, SSC, GK, SSB, UGC NET, police, railway and in other state level examinations. And here are some special features of this series. It include chapter wise discussion in notes forum, chapter wise question bank with each chapter, chapter wise collection of previous year questions including with 5 practice sets. So this is going to be the most important section for you people that will help you in different competitive exams like in banking, PO clerk, SSC, GK, SSB, UGC NET, railway, police and in other state level exams. और मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रिवाइज करें each chapter, each topic at least twice, and they can also practice MCQs, PYQs as well before their examination. इसके अलावा मैं आपको ऑल्सो बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। स्पेशली आप मेरी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहां मैं आपसे PDF शेयर करूंगा। अदरवाइज़ अगर आपको कोई क्वेरी डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देना मुझे ऑल्सो मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल। And currently we are discussing some important MCQ PYQs from this chapter that are important from your exam point of view. और हमने already complete किए हैं 2 MCQ PYQ sets from this chapter in which we had discussed at least 40 plus questions. Videos are available there, आप जाके उन videos को also देख सकते हैं. And today this will be our third MCQ PYQ set. So let's start with the question number 46. The first question is, using output device one can dash dash. This question had been already asked in IBPS RRB PU Mains 2017. Your options are 1. View or print document, 2. Modify data, 3. Storage data, 4. Replicate data and 5. Enter data. Here the correct answer is option 1. View or print data. Let's see the explanation. By using output devices जो users हैं they can easily view or print data. Basically जो purpose है output devices का that is to present processed information to the user that they can easily understand. और ये जो processed information है जो कि computer present करता है it can be displaying information on the screen that is viewing as well as it can be creating physical copies of data that is printing. Let's see also why other options are incorrect. If we talk about option 2 modifying data, it is incorrect because हम modify कर सकते हैं data को by using input devices and processing units or CPU. Then option 2 store data, it is also incorrect because जो general data है इसको generally store किया जाता है on storage devices like hard drives or SSDs. Then option 4 replicate data, it is also incorrect because it means making exact copies of digital information like copying a file on a computer. However, जो output devices हैं like printers, they can print many paper copies but they are not able to copy digital data because उनका जो main job है that is to show or to print information and not to save or duplicate data on the computer. Then option 5 enter data, it is also incorrect because हम generally डेटा को एंटर फीड करते हैं बाय यूजिंग इनपुट डिवाइसेस. हैंस जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है दैट इज़ अवर करेक्ट आंसर. नाउ लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन. दिस क्वेश्चन हैड बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन IBPS RRB PO Mains 2017. योर ऑप्शंस आर 1 यूनिट, 2 pixel, 3 array, 4 resolution and 5 chip. Here the correct answer is option 2 pixel. Let's see the explanation. The smallest unit in an image on a computer screen is called as pixel. Pixel जो है it is basically a generic term used for picture element जो कि basically हमें tiny dots और color देखने को मिलते हैं जो कि combine होते हैं in order to form image on the screen. And ये हमें मोज़ेक सॉफ्टवेयर की तरह देखने को मिलते हैं जो कि फॉर्म करते हैं एन इमेज बाय यूजिंग डिफरेंट पिक्सेल्स टुगेदर ईच विथ इट इज ओन कलर. है जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है दैट इज़ अवर करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर मॉनिटर. दिस क्वेश्चन हैड बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन SBI Clerk 2014. योर ऑप्शंस आर 1 सॉफ्टवेयर, 2 प्रोसेसिंग, 3 स्टोरेज, 4 इनपुट एंड 5 आउट.
I think this question will be more easy for you because we had discussed about it many times. Here the correct answer is option 5, output. Let's see the explanation. जो कंप्यूटर मॉनिटर है it is an output device because it displays visual or optical information which is generated by computer and monitor. And जो ये monitor है it also allow users to see texts, images, videos and other graphical content. Hence जो हमारा option number 5 है that is our correct answer. Now let us discuss another question. The question is soft copy refers to dash dash. This question had been already asked in IBPS Clerk 2013. Your options are 1 printed output, 2 digitizing, 3 music sounds, 4 screen output and 5 none of these. Here the correct answer is option 4 screen output. Let's see the explanation. The soft copy hand is basically a digital information which is displayed on the screen of monitor or smartphone. However, it's also important to note that कि जो screen output है it's not physically printed like a hard copy or printed document, but rather it is a digital information. Hence जो हमारा option number 4 है that is our correct answer. Now let's proceed to the next question. The question is the higher the resolution of a monitor, the your options are 1 larger the pixel, 2 less clear that the screen is, 3 further apart the pixels and 4 closer together the pixels. Here the correct answer is option 4 closer together the pixels. Let's see the explanation. जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन एक मॉनिटर का हाई होता है उतना ज़्यादा जो पिक्सल्स होते हैं वो क्लोज़र होते हैं. मीन्स जो इमेजेस और जो टेक्स्ट्स जो कि अपीयर होते हैं ऑन आवर स्क्रीन दैट आर मोर शार्पर एंड क्लोज़र, जो कि हम इजीली देख सकते हैं विथ फाइनर डिटेल्स. बेसिकली जो रेजोल्यूशन है इट मीन्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पिक्सल्स और पिक्चर एलिमेंट्स दैट display shows, and high resolution means the more pixels are packed or used together in the same screen area, जो कि ultimately provide करते हैं more details because the more number of pixels automatically screens display images with finer details and more sharper. और ये जो पिक्सल्स हैं इनका जो साइज़ है वो हमें जनरली स्मॉलर देखने को मिलता है which becomes impossible for us to saw these pixels through our naked eyes. And when these pixels are packed or used together, that leads to the pixelated or smoother images that ultimately creates more clearer and defined images or pictures. Therefore, जितने ज़्यादा resolution high होगी, the more closer the pixels will be that ultimately creates more sharper and detailed images. Hence जो हमारा option number 4 है that is our correct answer. Now let's proceed to the another question. The question is screen on monitor device is. This question had been already asked in UPSSSC 2016. Your options are 1 hard copy, 2 soft copy, 3 input device and 4 display device. Here the correct answer is option 4 display device. A screen or monitor it is basically a display device or we can say it is an input device जो कि visually present करता है output को from computer. और ये जो डिवाइसेस हैं इनको जनरली यूज़ किया जाता है टू डिस्प्ले सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और इनको प्राइमरली क्लासीफाई किया जाता है एज डिस्प्ले आउटपुट डिवाइसेस. हेंस जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज़ आवर करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द CTR इज डैश डैश इन शेप. दिस क्वेश्चन हैड बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन RBI Grade B 2013. योर ऑप्शंस आर 1 सर्कुलर, 2 रेक्टेंगुलर, 3 eclipse and 4 conical and 5 none of these. Here the correct answer is option 2 rectangular. Let's see the explanation. CTR जो है it stands for cathode ray tube और ये जो monitors televisions हैं these generally have a rectangular shape with a curved or flat display screen. और ये जो CTR monitors TVs हैं they use electron beams to absorb phosphorus on the screen in order to produce images. Hence जो हमारा option number 2 है that is our correct answer. Now let's move to the next question. The question is CTR has a. This question had been already asked in RBI Grade B 2013. Your options are 1 hollow tube, 2 vacuum tube, 3 long tube, 4 round tube and 5 none of these. Here the correct answer is option 2 vacuum tube. Let's see the explanation. CTR that is cathode ray tube
ये जो मोनीटर्स और ये जो टीवीज़ हैं दे यूज़ वैक्यूम ट्यूब्स इनसाइड, जो कि बेसिकली अलाउ करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम्स को टू मूव फ्रीली विदाउट द डिस्टर्बेंस ऑफ एयर पार्टिकल्स। और ये जो बीम्स हैं दीज बीम्स स्ट्राइक्स और रिफ्लेक्ट्स ऑन द फास्फोरेसेंट स्क्रीन in order to create images on the display. And जो हमारा option number 2 है that is our correct answer. Now let's proceed to the another question. The question is the rate at which scanning is repeated in a CTR is called. Your options are 1 refresh rate, 2 resolution, 3 pitch and 4 bandwidth. Here the correct answer is option 1 refresh rate. Let's see the explanation. Refresh rate जो है it basically means how many times per second the CTR monitor or screen updates the images. और इसको जनरली मेजर किया जाता है in hertz Hz. And higher refresher rates means less flicker, smoother motion and better view experiences, especially in games and videos. And जो हमारा option number 1 है that is our correct answer. Let's move to the another question. The question is dash dash provides hard copy output on paper. This question had been already asked in SBI Clerk 2015. Your options are 1 mouse, 2 keyboard, 3 LCD monitor, 4 scanner and 5 printer. Here the correct answer is option 5 printer. Let's see the explanation. जो प्रिंटर है इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस जो कि क्रिएट करता है हार्ड कॉपी ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस और टेक्स्ट्स ऑन ए पेपर। एंड अनलाइक मोनीटर्स और स्क्रीन जो कि डिस्प्ले करते हैं सॉफ्ट कॉपीज़, जो प्रिंटर्स हैं दीज क्रिएट टेंजेबल और फिजिकल कॉपीज़ ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस और टेक्स्ट्स ऑन पेपर। हैंस जो हमारा ऑप्शन नंबर 5 है दैट इज़ आवर करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ। This question had been already asked in SBI Clerk 2014. Your options are 1 output device, 2 input device, 3 processing device, 4 storage device and 5 none of the above. As just we had talked about it, here the correct answer is option 1 output device. Let's see the explanation. Printer जो है is an example of output device जिसको यूज़ किया जाता है to print digital information from a computer on a paper in the form of physical or hard copy output. And unlike other input devices such as keyboard or mouse जो कि send करते हैं data to the computer, जो printer है it prints digital information in the form of physical or hard copy output on the paper. Hence जो हमारा option number 1 है that becomes our correct answer. Now let's proceed to the another question. The question is what are the units used to count the speed of a printer? This question had been already asked in IBPS Clerk 2013. Your options are 1 CPM, 2 DPI, 3 ppm, 4 bit and 5 none of these. Here the correct answer is option 3 ppm. Let's see the explanation. First of all ppm it stands for page per minute. और जो स्पीड है प्रिंटर्स की उसको जनरली मेज़र किया जाता है थ्रू ppm दैट इज़ पेजेस पर मिनट। और जनरली इसको यूज़ किया जाता है टू मेजर द स्पीड ऑफ लेज़र एंड इंकजेट प्रिंटर्स। देन LPM दैट इज़ लाइन्स पर मिनट, इसको यूज़ किया जाता है टू मेजर द स्पीड इन लाइन प्रिंटर्स। देन CPS जो है दैट इज़ कैरेक्टर पर सेकेंड, इसको यूज़ किया जाता है टू मेजर द स्पीड इन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। Let's also talk about other options. If we talk about a CPM that is character per minute, इसको जनरली यूज़ किया जाता है टू मेजर द टाइपिंग स्पीड नॉट द स्पीड ऑफ प्रिंटर्स। दैन DPI दैट इज़ डॉट पर इंच, इसको यूज़ किया जाता है टू मेजर द प्रिंट रेजोल्यूशन इन प्रिंटर्स बट नॉट ए स्पीड। दैन BIT जो है इसको यूज़ किया जाता है टू मेजर द डेटा नॉट प्रिंट स्पीड। देयरफॉर जो ppm है इट इज़ द करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ लेज़र और इंकजेट प्रिंटर्स। हैंस जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है दैट इज़ अवर करेक्ट आंसर। Now let's proceed to the next question. The question is dash dash printer cannot print more than one character at a time. This question had been already asked in SSC CHSL 2013. Your options are 1 line, 2 daisy wheel, 3 laser and 4 dot matrix. Here the correct answer is option 2 daisy wheel. Let's see the explanation.
जो डेजी व्हील प्रिंटर है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर जो कि प्रिंट नहीं कर सकते हैं मोर देन वन कैरेक्टर एट ए टाइम। बेसिकली जो डेजी व्हील प्रिंटर्स हैं, दीज प्रिंटर्स वर्क लाइक ए टाइप राइडर, जिनके हमें स्पिनिंग व्हील देखने को मिलते हैं विद लेटर्स ऑन इट, एंड इट प्रिंट्स when this wheel spins to the right left, then जो hammers हैं that hit spinning wheel to press the ink onto the paper, and it generally prints one letter at a time. and ये जो printers हैं, these printers are generally slower, जो कि provide करते हैं clearer typewriter style text. Let's also talk about other options. If we talk about line printers, ये जो printers हैं, these printers print entire line of a text at once. Then laser printers, ये जो printers हैं, these are basically non impact printers जो कि यूज़ करते हैं laser beams to create an image on a drum, जो कि then further translate करते हैं toner powder on the paper. and ये जो printers हैं, these printers print page by page. then dot matrix printers, ये also हमें impact printers देखने को मिलते हैं जो कि यूज़ करते हैं print head with number of pins on it to print the text or documents. और ये जो printers हैं, these printers form images and characters by using these pins against the ink ribbon. और ये जो printers हैं, these printers print character by using matrix of dots, but not the pre-formed character like daisy wheel printer. है जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, that is our correct answer. Now let's proceed to the another question. The question is, speed of line printer is limited by the speed of your options are 1 paper movements, 2 cartridge used, 3 length of paper, 4 all of these, and 5 none of these. This question had been already asked in SBI Clerk 2013, and the correct answer of this question is 1 paper movements. जो स्पीड है लाइन प्रिंटर्स की, इसको जनरली मेजर किया जाता है थ्रू द पेपर मूवमेंट स्पीड. और ये जो प्रिंटर्स हैं, दीज printers are limited up to the paper movement speed because ये जो printers हैं, these printers print an entire line at once. However, other factors that were given in the options like cartridge or paper length that also play a role in the overall efficiency of these printers, but again they do not directly determine the printing speed, but rather जो पेपर मूवमेंट है इन द लाइट प्रिंटर्स दैट डिटरमाइंस हाउ फास्ट द न्यू लाइन्स कैन बी प्रिंटेड, विच मेक्स इट मेन लिमिटिंग फैक्टर. है ना जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, दैट्स आवर करेक्ट आंसर. नाउ लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, एन एग्जांपल ऑफ पेरिफेरल इक्विपमेंट इज, योर ऑप्शंस आर 1 प्रिंटर, 2 CPU, 3 spreadsheet, 4 microprocessor. Here the correct answer is option 1 printer. Let's see the explanation. First of all, what are peripheral equipments? जो peripheral equipments हैं, these are basically external devices that are connected to the computer, जो कि work करते हैं also with the computer, but इनको हम consider नहीं कर सकते हैं as a core part of computer system. And these peripheral devices include keyboard, mouse, printer, monitor, USB drive, etc. जो कि basically part नहीं है computer के main brain के like CPU, RAM और motherboard के. और जो प्रिंटर है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस बिकॉज इसको जनरली यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस हॉट कॉपीज ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स. अदर ऑप्शंस लाइक ऑप्शन 2 CPU जो है, इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज जो CPU है, इट इज़ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि एक्ट करता है एज ए कोर ऑफ कंप्यूटर विच इज़ नॉट बेसिकली ए पेरिफेरल डिवाइस. देन ऑप्शन 3 स्प्रेडशीट, इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज जो स्प्रेडशीट है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर नॉट ए पेरिफेरल और हार्डवेयर. देन ऑप्शन 4 जो है माइक्रो कंप्यूटर, इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज जो माइक्रो कंप्यूटर है, इट बेसिकली डिस्क्राइब्स द कंप्यूटर कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम नॉट ए पेरिफेरल डिवाइस. एंड जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, दैट इज़ अवर करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज, योर ऑप्शंस आर 1 यूनिडायरेक्शनल, 2 bidirectional, 3 sequential, and 4 random. Here the correct answer is bidirectional. Let's see the explanation. जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स हैं, these are such type of impact printers जो कि प्रिंट करते हैं by striking ink a so-called ribbon against the paper. और ये जो प्रिंटर्स हैं, these printers move bidirectionally
means ये जो printers हैं, these printers print in both directions, that is left to right and right to left, which makes printing more faster as compared to unidirectional printing. है ना, जो हमारा option number 2 है, that is our correct answer. Now let's move to the next question. The question is, the input printers are, your options are 1 dot matrix, 2 drum, 3 inkjet and 4 both 1 and 2. Here the correct answer is option 4, both 1 and 2. Let's see the explanation. जो impact printers हैं, these are those type of printers जो कि work करते हैं by physically striking an ink ribbon to transfer ink onto the paper. And examples of impact printers include both of these, like dot matrix printer. ये जो printers हैं, these printers use print head with pins जो कि strike करते हैं on the ribbon to form characters. And drum printers, ये जो printers हैं, these printers use rotating drum with characters on it and hammer जो कि directly strike करता है on the paper against the ribbon and drum. While जो inkjet printers हैं, that was given in the option, it is basically, these are basically non-impact printers because ये जो printers हैं, these printers spray ink onto the paper without physical contact. Hence जो हमारा option number 4 है, that is our correct answer. Now let's proceed to the next question. The question is, drum printers is an example of, your options are 1 input, 2 output, 3 processing and 4 storage. Here the correct answer is option 2 output. Let's see the explanation. जो drum printer है, it is an example of impact output device जिसको यूज़ किया जाता है to print text on the paper, और इसको जनरली क्लासीफाई किया जाता है एज आउटपुट डिवाइस बिकॉज इट प्रोड्यूस हार्ड कॉपीज ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन विच इज़ प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर. है जो हमारा ऑप्शन 2 है, दैट इज़ अवर करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, द एग्जांपल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर. दिस क्वेश्चन हैड बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन RBI grade B 2013. Your options are 1 laser dot matrix, 2 inkjet laser, 3 inkjet dot matrix, 4 dot matrix and 5 none of these. Here the correct answer is option 2 inkjet laser. Let's see the explanation. ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, these printers do not directly strikes on the paper physically, but rather they use different methods like they spray ink or laser technology to print texts or documents on paper. Like जो inkjet printers हैं, they spray tiny droplets of ink onto the paper, and जो laser printers हैं, they use laser beams and toner powder to print texts and images, which makes them non-impact printers. While on the other hand, if we talk about dot matrix printers, these are impact printers because जो printers हैं, these printers generally use print head to strike on the paper to print text or documents. And जो हमारा option number 2 है, that is our correct answer. Now let's proceed to the next question. The question is, line printer speed is specified in terms of. This question had been already asked in RBI grade B 2013. Your options are 1 LPM lines per minute, 2 CPM characters per minute, 3 DPM and 4 any of the above and 5 none of the above. Here the correct answer is option 1 LPM, that is lines per minute. Let's see the explanation. As discussed earlier, जो लाइन प्रिंटर्स हैं इनकी हमें जनरली स्पीड हाई देखने को मिलती है. दैट आर बेसिकली हाई स्पीड इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो कि प्रिंट करते हैं एंटायर लाइन को एट टाइम, और इनकी जो स्पीड है इसको मेजर किया जाता है इन लाइन्स पर मिनट, दैट इज़ LPM, बिकॉज ये जो प्रिंटर्स हैं, दीज प्रिंटर्स प्रोसेस और print whole lines rather than individual characters. While if we talk about other options like CPM, that is characters per minute, इसको यूज़ किया जाता है to measure the speed of character based printers. Then DPM, that is dots per minute, ये हमें स्टैंडर्ड टर्म नहीं देखने को मिलती है फॉर प्रिंटर स्पीड. Hence जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, that becomes our correct answer. Now let's discuss another question. This will be our last question of this session. The question is, in laser printers, printing is achieved by detecting laser beam onto dash surface of a. This question had been already asked in SBI PO 2013. Your options are 1 magnetized, 2 photosensitive, 3 magnetic and 4 either 1 or 2 and 5 none of these.
Here the correct answer is option 2, photosensitive. Let's see the explanation. So laser printers हैं they work by using a light sensitive drum, जहाँ laser beams जो हैं they draw the page onto the drum by using static electricity. Then powder ink or further powder ink or toner sticks on the image, and finally जो image है that is pressed and heated onto the paper to make permanent print. While जो magnetized और magnetic surfaces हैं which were given in the option, ये जो surfaces हैं these surfaces are not used in laser printing. Instead ये जो surfaces हैं इनको use किया जाता था in old storage devices like hard drives and floppy disks, जहाँ जो data है that is stored by using magnetic patterns. While जो laser printers हैं on the other hand, these printers use electrostatic charge and toner powder but not magnetism to print images and texts on paper. Therefore photosensitive surfaces जो है वो हमें crucial देखने को मिलते हैं in the laser printing process. And जो हमारा option number 2 है that is our correct answer. So guys, that is it for today. I hope you liked this video, you enjoyed this video. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो शेयर कीजिए. एंड आई होप आपको सब कुछ ऐसे ऐसे क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए. अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. अदर देन दैट यू कैन आल्सो मेल मी ऑन दिस ईमेल and you can also follow me on these social media platforms. So that's it for today. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.